अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा, उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण जी ने क्या तैयारी करके रखी है. So these are three particular questions. Before I entertain the questions on this, I would like to brief you in English. सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए हैं बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार. Borrow and conquer is a new mantra of Modi ji and company. If one analyzes the economic and financial condition of the BJP government has inflicted upon the country, one would have no reason not to believe that it is a nightmare. One of the most worrying aspects is the spiraling debt pattern. The outstanding internal and external debt and other liabilities of central government at the end of year FY23 are estimated to rupees 152 lakh crore as against 55.9 lakh crore at the end of financial year 2014. So per capita debt on us increased from 43,124 rupees as on March 2014 to rupees 1,09,000 as on March 2023. That is an increase of 152% in the last 9 years. Debt being offered on a platter to some friends of the government has created an anxious position for the nation on top of the national debt obligation. तो एक तरफ तो सरकार ने अपना कर्जा ले लेके हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हर हिंदुस्तानी पर डाल रखा है, और दूसरी ओर उनके दोस्त भी वही मॉडल काम में ले रहे हैं. 2,30,000 करोड़ का कर्जा. Recently, a New York-based credit research firm, Credit Sites, published its analysis on the debt position of the Adani Group. Startling facts have emerged from this analysis. The gross total debt with all key Adani entities is close to rupees 2.3 trillion rupees. So total debt on Adani Group is 2,30,000 crore rupees. Some of the facts are as summarized from that report. Point number 1. The credit report has drawn up several credit concerns ranging from groups overly leveraged aggressive expansion to forays into new or unrelated businesses, environmental, social and governance risks, and at last but not least, limited evidence of equity capital injection by Gautam Adani and his family. So as per this report, the group is aggressively, overly leveraged because of its aggressive expansion plan, and they are entering into unrelated and new businesses. And the family of Gautam Adani and promoters of the firm are not infusing enough capital. They are surviving only due to debts. Second, out of the major loans obtained by Adani Group in year 2020 and from April 2020 to June 2022, that is rupees 48,000 crore, 40% of its loan are funded by SBI alone. That is 18,770 crore rupees. Remaining 60% is funded by 14 global private banks. This exposes the most prominent Indian bank to go to a huge risk. Adani Enterprises and Adani Green Energy, with a combined gross debt of rupees 94,400 crore, have EBITDA to gross debt ratio of mere 1.5 times. The report highlights that these businesses, and this is important, this report says that these businesses do not make profits in the initial years, and hence there is a likelihood of rolling over or refinancing for interest obligation, for which they would again have to reach out to banks. The report calls out an overly ambitious debt-funded growth plans could eventually spiral into a massive debt trap. And the other important point to note is that Credit Site report puts this blatantly. I quote,
Gautam Adani also enjoys healthy relationship with the ruling Modi administration. Mr. Adani and Indian PM Mr. Narendra Modi know each other well, going back to the later days as the Chief Minister of the Gujarat state. Everyone would recall our press conference on a similar subject dated June 23, 2022. The chairman of Sri Lankan state-owned Ceylon Electricity Board claimed before a parliamentary panel that PM Narendra Modi ji pressurized Sri Lankan president to award a wind power project to the Adani Group. Also, as soon as the Modi government came to power in 2014, SBI drafted an in-principle agreement with the Adani Group of $1 billion and bought in several banks worldwide to provide fundings. After constant protest, SBI backed off and scrapped the MOU. In 2020, news of another rupees 5,000 crore loan by State Bank of India to Adani's Carmichael coal project in Australia became public. Pressure by investors such as Amundi and AXA led to SBI's loan stuck. We are not having any update on this till now. The latest gimmick has been still the acquisition of 29.19% stake by Adani Group in a leading news channel. This was executed without an input from, conversation with, or consent of the channel's founders. The Adani Group also announced an open offer to buy another 26% stake in that particular channel. So we have 3 specific questions for the constant sleep mode BJP government. Number 1, who from the government is pressurizing banks such as State Bank of India to grant loans of such proportions, putting the national economy and banks at colossal risk? Why are the Finance Ministry and SEBI sitting idle on the entire hostile acquisition episode of a leading TV news channel? And what is the Modi government plans to save the economy and specific sectors from the collateral and cascading damage in case of default or loan repayment delay, as the Adani Group's debt is consistently increasing? So friends, I am open for questions. First of all, I would like to entertain questions on the subject, and thereafter we can have few more questions. Yes, please. Ji. Any other question? देखिए, अभी तक इस बाबत कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमने पूरा नहीं पढ़ा है. जो आप जो बता रहे हैं वो अभी भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है. तो जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम पूरा नहीं पढ़ लेते, उसमें क्या क्या इश्यूज़ इंगित किए गए हैं, जब तक हम पूरा उसका अवलोकन नहीं कर लेते, इस बाबत कोई भी बात कहना अभी जल्दबाजी होगी. भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आज भी हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण विश्वास है, और हमें उम्मीद है कि संविधान बिल्किस बानो के साथ न्याय करेगा. भारत की न्याय प्रणाली न्याय करेगी. जो 11 दुष्कर्म के दोषी लोग, उनको जिस तरह से माला पहना के जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए, गुजरात सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए एक शर्म की बात है. एक दुष्कर्म के दोषी 11 लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है. उनको इस तरह स्वागत किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया हो.
शर्म आनी चाहिए गुजरात सरकार को, शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, जो मूक दर्शक बन के सारी चीजें देख रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की न्याय प्रणाली, भारत का संविधान हमारे देश की बेटियों को न्याय देगा। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ सिर्फ खोखला नारा नहीं हो सकता, बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे आप दे रहे हो और दूसरी तरफ बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हो। मुझे और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्किस बानो को न्याय देगा और जिन लोगों ने भी इस न्याय व्यवस्था का उपहास उड़ाने का प्रयास किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बेशरम लोग हैं वो जिन्होंने एक दुष्कर्म, जो पीड़ित महिला उसके साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका माल्यार्पण के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेहुदापन कभी नहीं हो सकता। How can they give the answers properly? Because if they will give the answers properly, they have to answer that under which provision, of which act they had installed or they had used Pegasus weapon against Rahul Gandhi ji, against the leaders of opposition party, against the senior journalists of our country, against the election commissioner of our country, against the important scientists of our country, against the civil society activists of our country, against the Supreme Court of our country, because this government had used this Pegasus weapon against the registrar of Supreme Court of India also. So how can they answer? Everybody knows that this weapon was used. This weapon had given a dent to the democracy. Everybody is used that this weapon is against the law or the constitution of our country. How can they give the answer? कई बार उत्तर नहीं देना भी एक उत्तर होता है। सरकार ने बता दिया कि उन्होंने पेगासस हथियार का प्रयोग इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ किया था। सरकार ने चुप रह के ये बता दिया कि इस पेगासस हथियार का प्रयोग सरकार ने राहुल गांधी जी के खिलाफ, अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, मुख्य वैज्ञानिकों के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, देश के सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्टों के खिलाफ, देश के सीनियर जर्नलिस्टों के खिलाफ किया है। अब क्या उत्तर देने को रह जाता है? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस नई उत्तर देने को भी एक उत्तर मानेगा और सरकार के खिलाफ इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि हम तो पहले दिन से ही पूछ रहे हैं, पेगासस हथियार का प्रयोग सरकार ने क्यों किया, किस कानून के अंतर्गत किया? जिस हथियार का प्रयोग आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है, जिस हथियार का प्रयोग दुश्मन देश के जो लोगों के खिलाफ किया जाता है, सरकार ने उस हथियार का प्रयोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए क्यों किया? भारत की न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए क्यों किया? भारत की एग्जीक्यूटिव को कमजोर करने के लिए क्यों किया? इसके बारे में उसको उत्तर देना चाहिए। हमने आपको डिटेल्ड ब्यौरा दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, उस हथियार का प्रयोग अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर उस हथियार का प्रयोग किया गया। उससे सिर्फ आपने लोकतंत्र और भारत के संविधान को कमजोर करने का काम किया। और किस हैसियत से वो हथियार खरीदा गया? वो एक हथियार है, जैसा राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, दैट इज ए वेपन टू गिव ए डेंट टू द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ए वेपन टू गिव ए डेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ए वेपन अगेंस्ट parliamentary,
अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ उस वेपन का प्रयोग करते हो तो उससे आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेंट देते हो। जब आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के फोन में उस वेपन का प्रयोग करते हो तो आप जुडिशरी को डेंट देने का काम करते हो। जब आप भारत के निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर है जो देश के, उनके फोन पे इस वेपन का प्रयोग करते हो तो आप एग्जीक्यूटिव को कमजोर करने का काम करते हो। जब आप उस वेपन का प्रयोग देश के सिविल राइट के एक्टिविस्ट, देश के सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ करते हो तो आप देश का जो चौथा स्तंभ है उसको डेंट देने का काम करते हो। इसलिए नहीं उत्तर भी एक उत्तर है। और क्या उत्तर देगी सरकार, हमें भी पता है और देश के हर व्यक्ति को पता है कि इस वेपन का, इस हथियार का प्रयोग मोदी सरकार ने देश के संविधान को डेंट देने के लिए, देश के लोकतंत्र को डेंट देने के लिए किया है। थैंक यू वेरी मच।